Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। जीके बहुत ही वास्ट एरिया है और इसकी तैयारी करते वक्त आपका एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज में हर वीडियो में मैं एक हफ्ते का जीके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस गेन हो जाएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और तो और हर वीडियो में जो रिसर्च के लिंक्स हैं वो हम कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम फरवरी वीक 3 का जीके डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल ये क्लैट के रेलेवेंट है, मतलब पैसेज बेस्ड जीके हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक्स अगेन काफी वाइड है, कुछ 17 to 18 टॉपिक्स है, विच इंक्लूड्स द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, प्रेसिडेंट रिटर्निंग कैबिनेट डिसीजन, इस पे आरटीआई हुआ था, governor appointments, India-US space agreement, space cooperation, WPL के auctions, ईरान चाइना के ties, एयर इंडिया और बोइंग का डील, विंडफॉल टैक्सेस एंड मेनी मेनी मोर, राइट। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। चलिए एक एक करके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बिफोर आई गो अहेड एक क्विक सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट कर दूं। इनफैक्ट दो चीजें बताऊंगा, आपको रिमाइंड करूंगा। एक कि जो भी मैं जीके डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ पैसेजेस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इन सब का जो अगर रिसर्च लिंक्स आपको चाहिए, ऑब्वियसली टेस्ट फॉर्म में अगर आप इसको लेते हैं इस वीडियो को देखने से पहले, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और ये टेस्ट फॉर्म में लेने के लिए आपको हमारे पोर्टल पे जाकर के साइन अप करना होगा। बट एक और बेनिफिट उसका ये है कि आपको इन सब टॉपिक्स पे रिसर्च लिंक्स मिलेंगे। रिसर्च लिंक्स मतलब मैं अगर 5 या 7 क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसके अलावा और भी क्वेश्चंस अगर बन सकते हैं तो आप डायरेक्टली उन आर्टिकल से, उन लिंक से आप कंपाइल कर सकते हैं और अपना नॉलेज बूस्ट कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स वन बिग एडवांटेज। और दूसरा एडवांटेज ये है कि हमारे पोर्टल पे साइन अप करते ही आपको एक फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा, which I think is something that you should definitely try out, कि हमारा टेस्ट जो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहेगा, राइट। मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, बट इट इज व्हाट इट इज। चलिए आज के एजेंडा पे आते हैं। पहला टॉपिक देखेंगे सीबीएफसी, बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो है कंट्रोवर्सी में आ गया थोड़ा सा, क्योंकि पठान मूवी में काफी सीन्स जो है कट हुए हैं। तो मतलब आई थिंक दिस पैसेज बेसिकली टॉक्स अबाउट whether that those number of cuts are mandated or not। क्या ये रूल्स के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या ये एक्सेसिव है, राइट। तो इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं? ऑब्वियसली सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन पे बनेंगे। तो हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सीबीएफसी, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और अगर हम लॉज की बात करें तो ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है कौन से लॉज के अंडर आता है। एंड फाइनली सीबीएफसी जो है अगर फिल्म को सर्टिफिकेशन दे रहा है तो कौन से सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, राइट। व्हाट आर द डिफरेंट रेटिंग्स दैट मूवीज विल गेट, फिल्म्स विल गेट। तो इसके आंसर्स हैं। सीबीएफसी के चेयरमैन काफी प्रसिद्ध हैं, मिस्टर प्रसून जोशी, और सीबीएसई के जो स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है। और जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है सीबीएफसी का, दैट कम्स अंडर द सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 एंड द रूल्स, सिनेमाटोग्राफ रूल्स है ना, सर्टिफिकेशन रूल्स ऑफ 1983। तो ये रूल्स बाद में फ्रेम हुए थे, पहले सिनेमाटोग्राफ एक्ट पास हुआ था। और इसके अंडर जो है सीबीएफसी गिव्स 4 काइंड्स ऑफ रेटिंग्स, यू, यूए, ए एंड एस। अच्छा, और भी काफी सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस पे एक कमिटी बनाई गई थी रिसेंटली, तो 2016 में, टू ले डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, टेकिंग नोट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस। तो बेसिकली अपडेट करने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी। इस कमिटी को हेड करने वाले कौन थे, और इसके रिकमेंडेशंस के अधीन जो है कितने एज कैटेगरीज प्रपोज्ड है यूए के अंदर, राइट। सो बेसिकली यूए कैटेगरी को भी एज वाइज स्प्लिट करने का प्रपोजल है। तो कितने कैटेगरीज में स्प्लिट होगा,
फिल्म सर्टिफिकेट ट्रिब्यूनल एक होता था, जहां पे अगर आपका सेंसर बोर्ड अगर आपके फिल्म्स को कट कर रहा है तो उन कट्स को आप चैलेंज कर सकते थे। तो ये ट्रिब्यूनल एक एस्टैब्लिश हुआ हुआ था, बट इसको अबॉलिश किया गया रिसेंटली। तो ये कौन से साल में अबॉलिश हुआ? एंड अमेंडमेंट टू द सिनेमाटोग्राफ एक्ट वाज प्रपोज्ड इन विच ईयर? तो ये अमेंडमेंट कौन से साल में प्रपोज किया गया है? अभी पास नहीं हुआ है, तो आई थिंक ऑब्वियस सी बात है कि रिसेंट पास में ही हुआ है ये। और अंडर द अबव अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द चेयरमैन ऑफ सीबीएफसी टू, तो ये काफी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसके अंडर जो है ना सीबीएफसी के चेयरमैन, वो सॉरी, द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो है सीबीएफसी के चेयरमैन को डायरेक्शन दे सकती है कि भाई जाओ, आप इस मूवी को आप सर्टिफिकेट दे चुके हो बट इसको री एग्जामिन कीजिए, क्योंकि ये सेक्शन किसी एक सेक्शन ऑफ द सिनेमाटोग्राफ एक्ट को वायलेट करता है, राइट? सो वो कौन सा एक्ट है, कौन सा सेक्शन है? And then finally about movies, तो some historical questions like who's the father of Indian cinema, which was the first Indian feature film, right? इस पे और भी बन सकते हैं, बट सैंपल के लिए मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिखाए हैं, राइट? इसके आंसर्स देखते हैं। जो कमिटी बनाई गई थी टू ले डाउन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ले डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, उसके हेड का प्रसिद्ध फिल्म मेकर श्याम बेनेगल है। और इस कमिटी ने प्रपोज किया है कि यूए को एज वाइज स्प्लिट कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में, यूए 7+, 13+ एंड 16+, राइट? तो 3 कैटेगरीज में प्रपोज्ड है। और ट्रिब्यूनल जहां पे आप चैलेंज कर सकते थे सर्टिफिकेशन के कट्स को, तो ये ट्रिब्यूनल जो है 2021 में अबॉलिश किया गया था, राइट? एंड यू कैन सी व्हाई इट्स सच अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक कि आप पहले ऑपोजिशन नहीं कर सकते, आप अपोज नहीं कर सकते हो कट्स को, और उसके बाद एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट आ रहा है जिसके अंदर आप पुरानी मूवी, सर्टिफाइड मूवी को भी आप वापस बुला करके री एग्जामिन करवा सकते हैं, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल फॉर दीज रीजन, राइट? एंड प्रपोजल भी जो है सिनेमाटोग्राफ एक्ट को अमेंड करने का 2021 में, अमेंडमेंट बिल जो है 2021 में पास की गई, मतलब प्रपोज की गई। और इस अमेंडमेंट के अंडर सेक्शन 5B1 इज द एक्ट जिसके अंडर यूनियन गवर्नमेंट अगर वो बिलीव करता है कि इस सेक्शन के कंडीशंस को वायलेट कर रहा है अगर कोई मूवी, which broadly has to do with public safety and propriety and national security, तो the union government can then basically direct the chairman of the CBFC to re-examine a movie, right? और जहां तक बात है हिस्ट्री ऑफ सिनेमा की, तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इज श्री दादा साहेब फाल्के, इनके नाम पे फिल्म अवार्ड्स भी आते हैं। और द फर्स्ट फीचर फिल्म इज आल्सो वन मेड बाय दादा साहेब फाल्के, विच इज राजा हरिश्चंद्र। तो ये थे मूवीज के अराउंड क्वेश्चंस, राइट? आई होप मजा आया आपको। एज यूजुअल काफी सारे लिंक्स भी मैं कंपाइल कर रहा हूं, तो सो इनफैक्ट अगर आप इसको टेस्ट फॉर्म में नहीं लिया है आपने, तो जरूर लीजिए जाके, आई थिंक, या इस वीडियो को देख लीजिए, एंड एट सम पॉइंट इन टाइम अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो मे बी यू कैन देन गो अहेड एंड टेक इट एज अ टेस्ट, राइट? वी हैव अचीव्ड लिमिटेड, ये जो अगला टॉपिक आ रहा है ये वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के बारे में आ रहा है, राइट? तो आई थिंक वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के बारे में यूनाइटेड नेशंस में एक स्पीच दी गई थी बाय मिस्टर कुमार, और इस पे वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं ये देखते हैं, राइट? सो ऑब्वियसली द फर्स्ट क्वेश्चन इसकी यार, ये कब और कहाँ हुआ? तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का ये 12वां एपिसोड था, तो ये कहाँ हुआ गया था, और इसका थीम क्या था, राइट? एंड ऑल्सो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम दिस वाज हेल्ड, एंड फाइनली जिस कंट्री में भी ये वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन है? काफी इंट्रीगिंग क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी लेस नोन कंट्री। और फाइनली व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री दैट इज मेंशन्ड इन दिस where the national world हिंदी कॉन्फ्रेंस happened? तो 12वां हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है, आंसर्स देखते हैं इसके। 12th हिंदी कॉन्फ्रेंस happened in the country of Fiji, small country, island country of Fiji। अगर आपको नहीं पता तो Fiji is a country which is just north of न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आसपास रहता है ये Fiji Islands, and it's also why was it held there? क्योंकि Fiji में काफी सारे इंडियन लेबर इंडियंस वहां पे सेटल्ड है। Obviously most of them initially went because of indentured labor। जब कॉमनवेल्थ जब इंडिया कॉलोनियल पावर्स के अंडर था तो काफी सारे इंडियंस को वहां पे काम कराने के लिए ले गए थे, which they eventually settled down there, और इन लोगों ने फिर
इन लोगों ने फिर सिटीजनशिप ले ली फीजी की, राइट. एंड इनफैक्ट फीजी ऑल्सो, इसका हिस्ट्री भी आई थिंक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. वी शुड, you must check it out. But 12th Hindi Conference was basically held in this island nation of Fiji on Feb 12th to 15th of 2023. तो recently हुआ है. और इसके इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम था, दैट वाज हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट. तो हिंदी को आज के युग में हिंदी का रेलेवेंस आई थिंक इज द थीम. And for the first time this was held in the city of Nagpur as far back as 1975. और जहां तक बात फीजी के डिटेल्स के बारे में है, तो फीजी का जो कैपिटल है दैट इज सुबा. एंड फीजी के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है सिटिवेना रबुका, राइट. तो so that's those are answers about Fiji. In fact, you can do a little more reading up about Fiji. It's quite fascinating. चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. ये जो टॉपिक है, प्रेसिडेंट रिटर्निंग कैबिनेट डिसीजन. सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ रिटर्निंग सम बिल्स दैट आर प्रपोज्ड, दैट हैव बीन साइंड बाय द लोकसभा और द राज्यसभा. बट ये जो डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के पास होता है टू रिटर्न बैक बिल्स, राइट. याद रखना कि एक बार रिटर्न कर दिया तो वापस उसको उस पर अमेंडमेंट्स करके उसको वापस रिलुक करके जब पार्लियामेंट प्रेजेंट करता है वापस, तो देन ही कैनॉट, राइट, ही और शी कैनॉट return the bill again, right. He matlab is almost required to sign it and pass it, right. But पॉइंट ये था कि कितने एक आई थिंक राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई फाइल की गई थी कि भाई कितनी बार प्रेसिडेंट ने, करंट प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने कितनी बार बिल्स जो है वापस किए हैं, ऐसे कितने इंस्टेंसेस हुए हैं, राइट. बेसिकली द आइडिया इज टू सी इज she putting a check on the executive, is she putting a check on the ruling party BJP and the majority that they have, are they forcing bills through. तो इसका जवाब सरप्राइजिंगली came very ambiguous रिप्लाई था कि भाई हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, राइट. एंड सो काफी इंट्रीगिंग. एंड एनीवे पॉलिटिकल डिस्कशन पे नहीं जाऊंगा मैं, बट इस पे क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इलेक्ट कैसे होते हैं, राइट, होती हैं. It's obviously indirect elections, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शंस तो लोकसभा और लोकसभा के लिए होते हैं, but president elections is indirect, which means that elected representatives, basically vote for their candidate, right, for president. तो basically कौन से elected members हैं? Are they members of Lok Sabha? Are they members of Rajya Sabha? Are they members of legislative assemblies? Or are they members of legislative assemblies of states or legislative assemblies of union territories, right? तो कौन लोग जो है इलेक्ट करते हैं. एंड मैंने बोला था कि he or she has the power to send back bills, right, unless, right, which kind of bills can a president not send back for review, right. And finally president also has the power of appointing certain members to the Rajya Sabha, right. तो ये कितने nominations president करते हैं. And इसके आंसर्स है कि the elections happen by elected members of all of the four proposed bodies, right, which means elected members in Lok Sabha, elected members in Rajya Sabha, and also elected members in legislative assemblies of union territories and the states, right. और I think इसको भी थोड़ा सा अगर आप जांचें तो आपको समझ में आएगा कि ये इसमें भी प्रोपोर्शनैलिटी होती है कि आप जो भी लेजिस्लेटिव वोट करते हैं उनके वोट को एक वेटेज दिया जाता है, which depends on the population of the state that they are elected, constituency that they are elected from, and so on and so forth. एंड प्रेसिडेंट जो है किसी भी बिल को वापस भेज सकते हैं एक्सेप्ट इफ इट्स अ मनी बिल और अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, क्योंकि इन बिल्स को जो है प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकते हैं. एंड हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड? वेल देयर आर 12 मेंबर्स हु कैन बी नॉमिनेटेड by the president, and these are members who are supposed to be distinguished or have made extraordinary accomplishments in the field of science, art, literature, social service, and these kind of fields. और भी इस पे क्वेश्चन बनते हैं, राइट. हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स की बात कर रहे हैं तो कितने प्रेसिडेंट है जो एक से ज्यादा टर्म सर्व कर चुके हैं ऑफिस में, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल्स हैं जो यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब कैबिनेट, राइट. तो यूनियन एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट को लेकर के, सॉरी नॉट कैबिनेट बट एंटायर सॉर्ट ऑफ काउंसिल ऑफ एंटायर सॉर्ट ऑफ लोकसभा, राइट. सो कौन से आर्टिकल्स डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्पेसिफिकली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. And president also has that power of vetoing. So this, which article mentions the veto power of the president of India. And finally president has one very very
often used power, which is to impose president's rule on a state, right? And this power comes to him from which article of the constitution? Thoda sa political science ke questions zyada hai isme, but let's see the answers to these. Only one president in the past has served more than one term. ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एंड आर्टिकल्स 52 से 78 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पावर्स को डिस्क्राइब करते हैं, और इसमें से स्पेसिफिकली 52 to 62 जो है प्रेसिडेंट के बारे में होते हैं. इनफैक्ट और भी हैं, बट दीज आर द वंस दैट आर इन फोकस. एंड आर्टिकल 111 mentions the veto power of the president of India, which means he can veto bills that have already been passed. जो वापस करने की जो बात मैं कर रहा था, वो आर्टिकल 111 देता है. And Article 356 gives him, allows the president rule to be imposed upon a particular state or a union territory. And obviously, इसके भी कुछ conditions meet होने चाहिए, where obviously the elected government needs to be dissolved, or there could be no confidence हो गया है, सरकार गिर गई है, और दूसरी सरकार needs to be put in place, and there is an interim period in which जैसे अभी बीच में महाराष्ट्र में हुआ था, जहाँ पे I think the Shiv Sena withdrew support to the BJP government, and then elections, and then new government had to come into power and prove its majority. So by the time that interim period हुआ तब president's rule imposed हुआ था महाराष्ट्र में, right? So pretty much all states have at some point or the other seen president's rule imposed. चलिए, next topic, Amazon fund. Obviously a fund that has been put together not for Amazon, the e-commerce firm or the technology firm, but for the Amazon rainforests, right? So President Biden and US के जो president है, और President Lula जो ब्राजील के president है, इन दोनों ने एक mutual commitment किया towards the Amazon fund. As you obviously know, Amazon rainforest जो है साउथ अमेरिका में है, और a large portion of it lies within Brazil, and so I think the Amazon and again Amazon rainforests have been in the news काफी टाइम से, क्योंकि लगातार वहां पे फॉरेस्ट फायर्स होते रहते हैं, और रैपिड सॉर्ट ऑफ अर्बनाइजेशन हो रहा है, ट्रीज कट हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से इकोलॉजी जो है सफर कर रही है वहां की. तो बेसिकली entire world is sort of coming together, and there's a fund that has been put together called the Amazon Fund, जिससे कि मतलब commit करते हैं developed nation. I think about $100 billion have been committed to the fund, and so that's the background on this. इस पे क्वेश्चन देखते हैं. ये जो Amazon पे एक recently report पास की गई थी, right? ये था Conference of Parties 27 which was held at Sharm el Sheikh. तो इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था, इस रिपोर्ट का नाम क्या था, और इस रिपोर्ट को कंपाइल कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? ऑब्वियसली इट नीड्स टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस की, बट व्हिच वन स्पेसिफिकली? एंड अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हमने बोला था कि साउथ अमेरिका में, बट कितने कंट्रीज में अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है प्रेजेंट है? एंड ये जो इनिशिएटिव है अमेज़न फंड का, दिस इज सपोज्ड टू बी अ रेड प्लस initiative, and these RED Plus initiatives are supposed to prevent, monitor, and combat this problem of deforestation across the world, and to conserve, right, whatever forests we have, right? So RED का full form क्या है, और ये RED का framework जो है कब और कहाँ adopt किया गया था, right? So all of these are related to the topic itself, right? इसके answers देखते हैं. So the report that was published in 2022 is called the Riving Amazon report, and this was a report which was published by the World Wildlife Fund, WWF ने ये फंड ये रिपोर्ट पब्लिश किया था. इट्स अ पब्लिक रिपोर्ट, आप देख सकते हैं. आप इनफैक्ट इट्स अ फैसिनेटिंग रिपोर्ट बिकॉज टॉक्स अबाउट वेरियस फैसेट्स that Amazon is suffering from. मैंने देखा है, आप भी जरूर देखिए. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, आप वहां जाएंगे या साइन अप करेंगे तो ये रिपोर्ट भी आप एक्सेस कर पाएंगे. और अमेज़न जो है 9 कंट्रीज में, साउथ अमेरिका के 9 कंट्रीज में जो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट है. दीज कंट्रीज हैव बीन नेम्ड: ब्राजील, गयाना, फ्रेंच गयाना, सुरिनामे, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू एंड बोलिविया, right? So all the major countries of South America, basically they have the Amazon passing through at least one portion of that country.
और फैसिनेटिंग है कि एक तो अमेजोन रिवर है और फिर वो अमेजोन का बायोम बोलते हैं, राइट, इकोसिस्टम, राइट. So there are different boundaries for the biome and the river basin, right. So some of those maps are present in the report also. And the Amazon Fund is a RED Plus initiative. RED stands for reducing emissions from deforestation and forest degradation, right. So exactly, forest डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन को कॉम्बैट करने के लिए एक इनिशिएटिव है. और ये इनिशिएटिव जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 जो वॉर्सो में हुआ गया था 2013 दिसंबर को, उधर उस टाइम पे इट वाज अडॉप्टेड. आई थिंक अगर आपको याद हो तो द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन पेरिस वाज ratified by countries across the world, and one of those things in the agenda at that meeting was to मतलब कार्बन क्रेडिट्स की बात हुई थी, कार्बन सिंक्स की बात हुई थी, बट आई थिंक वन मेजर रोल टू कॉम्बैट पोल्यूशन, to combat global warming is to reduce how much deforestation is happening across the world. And countries like South American countries like Brazil and India have a big role to play, क्योंकि काफी सारा forest cover, natural green cover इन countries के पास है, right. And so the initiative that has been launched in 2013 at the Warsaw Conference of Parties 19 was the RED initiative, RED Plus initiative. अगला टॉपिक देखते हैं. दिस इज अबाउट गवर्नर अपॉइंटमेंट्स. 6 नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं और कुछ रेजिग्नेशंस भी एक्सेप्ट हुए हैं. एंड इट आल्सो इंक्लूड्स अ लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो इनके नाम ऑब्वियसली आर इंपॉर्टेंट. द मोस्ट कंट्रोवर्शियल नेम इज दैट ऑफ जस्टिस एस अब्दुल नसीर, जिन्होंने अयोध्या वाले केस में वर्डिक्ट दिया गया था. तो काफी इस पे भी कंट्रोवर्सी है कि हाउ कैन वन जज हुज पास्ड अ फेवरेबल judgment in the Ayodhya case for at least the government, then tit for tat उनको जो है अच्छा सा एक governor appointment दिया गया है. So anyway, I again will not get into the controversy on this. It is still something worth thinking about. But let's look at questions. इस पे क्या questions आ सकते हैं? तो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो गवर्नर के अपॉइंटमेंट्स को डील करता है, और गवर्नर बनने के लिए व्हाट इज द मिनिमम एज क्राइटेरिया, what is the how long can a governor of a state rule, and can a governor of a state be impeached, right. उनको हटाया जा सकता है क्योंकि अपॉइंटेड है, तो अपॉइंटमेंट को रिवर्स कैसे किया जाए. एंड फाइनली लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो how is that position different from a governor, right. Governor is appointed for a particular state, then what about lieutenant governor, right. I think the answer is pretty obvious, but let's look at all of the questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नर अपॉइंटमेंट्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बात करता है? दैट इज आर्टिकल 155, and the very next article 156 sets the term for which the governor can rule, and that term is 5 years, right. And to be appointed as the governor, the minimum age criteria is 35 years. And indeed, in fact, a governor can also rule in more than one state. ये power भी दी गई है. In fact, कई बार ऐसा होता है कि एक गवर्नर अगर रिजाइन कर जाते हैं तो very often an existing governor for another state is then given charge of that state for at least an interim period. So it's very common to see governors ruling, or not ruling, but overseeing or managing the administration of more than one states of the country. And governor of a state cannot be impeached. उनको democratic process से नहीं हटाया जा सकता है. वो जो है he can be removed only if the president withdraws his or her pleasure. बहुत curious wordings है. उनकी खुशी, उनकी मर्जी के हिसाब से basically remove किया जाएगा. Otherwise they will complete their 5-year term. And the lieutenant governor is a post that takes care of the administration of union territories. And currently 5 of the 8 union territories have lieutenant governors. These states that have lieutenant governors are obviously the national capital of Delhi, NCT जो दिल्ली का है, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, लद्दाख. These are the 5 states that have lieutenant governors. Okay, next topic, India-US space collaboration, space cooperation. तो basically US India Civil Space Joint Working Group की एक मीटिंग हुई थी, 8th मीटिंग थी ये, जो जनवरी 31st 2000
30 and 31 2023, but basically last to January के end में ये की गई थी, and obviously this has pertaining to space cooperation की वजह space exploration commercial, क्योंकि इंडिया और यूएस काफी 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 पहले से जो है कोलैबोरेट कर चुके हैं इन स्पेस, व्हेन राइट व्हेन द इनकोस्पार वाज एस्टैब्लिश्ड, एंड इनफैक्ट हम इन स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में एक बार पहले भी मैं एक टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं जब हमने बात करी थी एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक इनकोस्पार बना था, फिर इसरो बना था, और फिर अ लॉट ऑफ collaboration even happened at that early stage with the NASA. But अभी जो है there is a renewed push to include human exploration, right? तो नया फ्रंटियर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई ह्यूमंस को बाहर भेजा जाए. रिमेंबर, इंडिया ने अभी तक मैन्ड स्पेस ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट नहीं भेजे. तो सो दैट्स द इनफैक्ट इंडिया, जहां एक तरफ यूएस जो है स्पेसएक्स के साथ जो है दे आर ट्राइंग टू सेट अप, in fact SpaceX has very ambitious plans. In fact last year they, I think, 60 odd satellites were sent out by SpaceX into space, which is mind boggling. Itne sare satellites, matlab India hardly sent some 15 or 20, right? So that's the context. And in fact the US currently is trying to sort of replace the International Space Station with many smaller sort of space stations across the space. So that's what US is trying to do. They're trying to sort of go to the moon. They're trying to send people to the moon. Permanent base, permanent station बनाना चाहते हैं वहां पे भी. तो काफी उन advanced level पे है US, in fact even China. But India's I think current efforts are towards humans को बाहर भेजा जाए, और दूसरा commercial space commercial space exploration activities में जो है India wants to enter. They want basically, not currently it was all government led, and now we want private sector participation in it, right? So India और US का collaboration इस बारे में हो रहा है. और इस पे I think some questions, right? India का इसरो जो है एक दूसरे कंट्री की एजेंसी के साथ जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, राइट, कॉल्ड द लूपेक्स मिशन पे कोलैबोरेट कर रहा है. तो ये कौन सी स्पेस एजेंसी है, कौन से कंट्री की स्पेस एजेंसी है? और क्योंकि इसरो की बात कर रहे हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन जो आता है वो है चेयरमैन कौन है इसरो के, राइट? दे रिसेंटली चेंज्ड इनफैक्ट लास्ट ईयर. तो कौन है करंट चेयरमैन इसरो के? और नासा का कौन सा एक प्रोग्राम है जो एस्ट्रोनॉट्स को जो है वापस, रिमेंबर वन ऑफ द फर्स्ट मिशंस दैट was sent to the moon, sent humans to the moon was by the NASA, right? So Yuri Gagarin or those names are almost Buzz Aldrin, those names are almost indelible now, but which NASA program aims to send astronauts back to moon and even further back into Mars, right? जी कौन सा प्रोग्राम का नाम क्या है? और इस प्रोग्राम को नवंबर 2022 में किक ऑफ किया गया था, राइट? द फर्स्ट स्टेज, many stages, multi stage है ये. पहला स्टेज इसका जो किक ऑफ हुआ था kicked off by the launch of which partially reusable spacecraft, right? ये मतलब बेसिकली स्पेस पे जाकर के ये लॉन्च कर देगा और उसके बाद वापस ये लॉन्चिंग व्हीकल जो है इट विल कम बैक टू इंडिया एंड कम बैक टू द अर्थ एंड देन इट कैन बी रीयूज्ड अगेन, राइट? सो व्हिच वाज दिस स्पेसक्राफ्ट, राइट? तो इसके आंसर्स देखते हैं. पहला है कि लूपेक्स मिशन पे इसरो जो है JAXA जाक्सा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ कोलैबोरेट कर रही है, और इसरो के करंट चेयरमैन एस सोमनाथ जी हैं. एंड ये जो है K-Sivan को इन्होंने रिप्लेस किया है. और नासा का कौन सा प्रोग्राम है जो वापस एस्ट्रोनॉट्स को मून में भेजना चाहता है, मे बी इवेंचुअली इवन टू मार्स, इज कॉल्ड द आर्टेमिस प्रोग्राम. एंड आर्टेमिस प्रोग्राम का जो पहला स्टेज था जो अभी नवंबर 2022 में किक ऑफ किया गया था, दैट वाज बाय द ओरायन स्पेसक्राफ्ट, व्हिच इज द रीयूजेबल, पार्शियली रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट, क्रूड स्पेसक्राफ्ट बाय द वे, है ना? तो इसमें क्रू भी है. और भी इस पे क्वेश्चन है कि इसरो का कौन सा मिशन है जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, क्योंकि मैंने बोला था कि इंडिया अभी करंटली उस इंडिया का करंट गोल वही है, ह्यूमन सेंडिंग ह्यूमंस इनटू स्पेस. In fact, one of the reasons why we want to collaborate with NASA is that क्योंकि वो भेज चुके हैं astronauts into space. So a lot of the testing and for the astronauts who go out into space, they have that experience, right? US and Russia have that experience. So usually India used to send their astronauts to Russia for training.
बट नाउ आई थिंक वी आर एक्सप्लोरिंग दैट विद नासा। तो इस मिशन का नाम क्या है? और अर्थ एक्सप्लोरेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो जॉइंटली नासा और इसरो के थ्रू डेवलप हुआ है। इनफैक्ट डेवलप होकर के नासा से ये इंडिया वापस आ रहा है और इंडिया विल देन लॉन्च इट इनटू स्पेस, राइट? इसके दोनों कंट्रीज विल मेक यूज ऑफ दिस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, राइट? और ये इंफॉर्मेशन भी काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इंडिया फॉर एग्जांपल विल यूज इट फॉर वेदर पैटर्न, डिटेक्टिंग वेदर पैटर्न्स और नेचुरल डिजास्टर्स को अवॉइड करने के लिए वगैरह। सो इसरो मिशन जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी पे है, दैट्स कॉल्ड गगनयान। और ये जो जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो लॉन्च की गई है, इसका नाम है नासा इसरो निसार, इनफैक्ट नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, द अस्सी रिवर, अस्सी पोल्यूशन एंड नेग्लेक्ट। तो ऑब्वियसली बात है कि वाराणसी में है ये रिवर, और क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, तो ऑब्वियसली इस पे कंट्रोवर्सीज और शोर ज्यादा मचता है। बट द आइडिया इज दैट इवन दो अ लॉट ऑफ रिवर क्लीनिंग एक्टिविटीज हैपन, गंगा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल माना जाता है, राइट? I think if some of you visited, then you would know whether indeed those things are to be believed. But this report basically says that Assi River, which is one of the tributaries of the Ganga, it is completely full of fill and completely neglected. तो encroachments वगैरह हो रहे हैं, तो इसके बारे में है ये, right? So इस पे obviously intriguing topic है, तो इस पे questions क्या बन सकते हैं? वाराणसी पे questions बन सकते हैं, right? It has the distinction of being one of the world's oldest what kind of city, right? एंड वाराणसी का मेंशन जो है कौन से फेमस चाइनीज पिलग्रिम ने किया था, जो 635 कॉमन एरा, राइट? ये कौन से चाइनीज पिलग्रिम थे? वाराणसी को और किस नाम से जाना जाता है, राइट? इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज, तो एंड इट्स वन ऑफ द सिटीज व्हिच इज also well known not just in the north of India but also in the south of India, right? It has a special place. तो इसका और किस नाम से जाना जाता है? और 2021 में यूपी गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया था एंड टू फॉर्म अ कमिटी, एक कमिटी बनाया था, एंड इस कमिटी को बोला था कि भाई एक्शन लेना है ऑन राइज इन पोल्यूशन लेवल्स इन द गंगा। तो तो किसने जो है ये कमिटी बनाने का डायरेक्शन दिया था, राइट? यूपी गवर्नमेंट को। एंड फाइनली 2022 के मार्च में सेंट्रल रिलीज्ड अ डिटेल्ड प्लान टू रिजुविनेट हाउ मेनी रिवर्स, राइट? क्योंकि ये रिवर रिजुविनेशन प्रोग्राम है, गंगा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट हो चुका है, बट उसके बाद 2022 में एक नया प्रपोजल किया गया टू रिजुविनेट मोर रिवर्स, राइट? सो हाउ मेनी मोर रिवर्स, राइट? कुछ आई थिंक 11,000 करोड़ कमिट हो रहा है इसके वजह। तो एनीवे, the city of Varanasi is one of the world's oldest continuously inhabited cities, right? तो मतलब कई सारे cities ऐसे जो बहुत पुराने हैं but demolish होकर के civilization has sort of ended there, but Varanasi is one also known as Kashi is the other name for Varanasi. तो बनारस के नाम से भी earlier जाना जाता था। तो it is one of the oldest continuously inhabited cities, right? Even though काफी सारे इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे, सिटी को प्लंडर किया गया, डेमोलिश किया गया, बट हर बार सिटी कंटिन्यूड टू सॉर्ट ऑफ थ्राइव। एंड दिस इन द ईयर 635 सीई, ये चाइनीज जो पिलग्रिम थे शुआंग ज़ैंग, इन्होंने जो है वाराणसी के बारे में मेंशन किया गया। इनफैक्ट काफी ग्लोइंग कमेंट्स दिए थे अबाउट, इम्प्रेस हुए थे काफी वाराणसी के बारे में उस जमाने में, राइट? रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट 1600 इयर्स अगो। और यूपी गवर्नमेंट को जो डायरेक्शन दिया था कि भाई आप एक स्टडी कीजिए और एक्शन लीजिए टू क्लीन अप द गंगा, वाज डन बाय द नेशनल ग्रीन, एनजीटी जो होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और करंटली जो है 13 रिवर्स को रिजुविनेट करने का प्रपोजल है। मार्च 2022 में ये सेंटर ने प्लान रिलीज किया है। मैंने बताया था कि तकरीबन कुछ 11,000 करोड़ will be committed to it, and it involves a lot of major rivers like the Yamuna, Krishna, Kaveri, Mahanadi and the Brahmaputra, right? So it's quite a useful thing. Next topic, J&K Delimitation Panel. So basically थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपके पास होगा कि भाई आर्टिकल 370 पास किया गया, और एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट था उसको स्टेटहुड का रिवोक कर दिया गया, और उसके बाद उसको एक यूनियन टेरिटरी में
2 यूनियन टेरिटरीज में कार्व आउट किया गया। बट जब भी ऐसा होता है तो सो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज द पावर, द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। बेसिकली डीलिमिटेशन क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को असेस किया जाता है, तो या तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ा सकते हैं, उनको रीड्रॉ कर सकते हैं, बिफोर दैट new sort of when before that when the when statehood demands are met, when new states are carved out, when one state is split into another, तो उस टाइम पे ये delimitation exercise होती है। इनफैक्ट it was questioned and it was deemed as valid by the Supreme Court also, and that's what this topic is about. तो इस पे क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया, तो उन दोनों यूनियन टेरिटरीज का नाम बताइए। अर्स्टवाइल स्टेट जो था कौन से एक्ट के तहत ऐसे स्प्लिट किया गया, और इस डिलिमिटेशन कमीशन की जो हम बात कर रहे हैं विच इज डूइंग द रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो इसके चेयरपर्सन कौन थे, और सॉलिसिटर जनरल कौन है इंडिया के, क्योंकि ये केस जो है सॉलिसिटर जनरल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे प्रोसीडिंग्स को प्रोसीडिंग्स को लड़ते हैं, राइट। सो आंसर्स देखते हैं। द state of Jammu and Kashmir was split into 2 union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. Right? Or this was as part of the J&K Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019. And finally जो delimitation exercise हुआ है उसके जो chairperson है वो है former Supreme Court retired judge है रंजना प्रकाश देसाई, और solicitor general जो है इंडिया के वो है मिस्टर तुषार मेहता। और भी क्वेश्चंस हैं इसमें कि जो डिलिमिटेशन है इसकी थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज का आउटकम क्या है, राइट। हाउ मेनी सीट्स आर देयर, राइट, हैज इट चेंज्ड, राइट, फ्रॉम बिफोर, फ्रॉम अर्लियर, हैज देयर बीन अ चेंज इन नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली, एंड जो क्योंकि जेएनके की बात कर रहे थे, उपकर अलायंस इज समथिंग व्हिच इज इज हैज बीन इन द न्यूज़ क्वाइट prominently recently. तो Gupkar alliance is an alliance of which political parties from Jammu and Kashmir? तो आंसर इज कि जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में, यूनियन टेरिटरी की असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली में अब जो है 90 सीट्स होंगे, विच हैज बीन इंक्रीज बाय 7 सीट्स। पहले 83 सीट्स होते थे। और गुपकर अलायंस में जो है प्रोमिनेंट जो 2 पार्टीज हैं जम्मू एंड कश्मीर की, द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज द पार्टी of the Abdullahs, and the PDP जो है वो मुफ्तीज की पार्टी है। All right, so next topic देखते हैं, the heritage bill. In fact, not specifically heritage, but this is Geo Heritage, right? Geo Heritage, the draft Geo Heritage Sites and Geo Relics Preservation and Maintenance Bill 2022. Basically, काफी सारे ऐसे sites हैं जो Geo Heritage Sites माने जाते हैं, for example, the राम सेतु, राइट। तो ऐसे जियो हेरिटेज साइट्स और जियो रेलिक्स जो काफी वैल्यूएबल माने जाते हैं, उनको प्रिजर्व करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, राइट। सो that is what has been proposed by the Geological Survey of India, which is, I think, ये भी एक जीके क्वेश्चन बन सकता है। जीएसआई जो है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कितना पुराना है इंडिया में? इट हैज अ वेरी वेरी रिच हिस्ट्री, almost 170 years old. So you can turn backwards, count backwards, and figure out what the date was when it was established. But obviously the idea was at that point in time to do geological surveys, है ना। this for example Mount Everest का height भी measure किया गया, right? All of these things happened by the through the GSI. क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसके जो है यूनियन मिनिस्टर कौन है, एंड व्हाट वाज द कन्वेंशन, क्योंकि वर्ल्ड कल्चरल नेचुरल हेरिटेज, प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल नेचुरल हेरिटेज का कन्वेंशन है, विच वाज अडॉप्टेड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूएस को। ये कब हुआ था, है ना, एंड वेयर इज द जीएसआई हेडक्वार्टर्ड, राइट, जीएसआई हेडक्वार्टर्स का है। तो आंसर इज की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, कोल्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, 3 मिनिस्ट्रीज हैं जिनका चार्ज जो है मिस्टर प्रहलाद जोशी के पास है। और 1972 के नवंबर 16 को जो है ये कन्वेंशन था, which was about which adopted the protection of world cultural and natural heritage, right? So इस इनिशिएटिव को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक, वेल, वुमेन्स प्रीमियर लीग, राइट, आईपीएल फेमस हो गया, तो अब इनफैक्ट अ लॉट ऑफ बज हैपेंड रिसेंटली अराउंड वुमेन्स क्रिकेट, and one of those things was the Women's Premier League
के जो ऑक्शंस हुए थे, राइट? एंड सो काफी फैसिनेटिंग है, इस पे क्वेश्चंस भी काफी इंटरेस्टिंग है. हाउ मेनी टीम्स आर देयर, राइट? व्हिच प्लेयर फेच्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, एंड हाउ मच मनी इज ईच टीम गेटिंग इन द WPL ऑक्शन. इनफैक्ट कितनी टीम्स हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स, 3 करोड़ से ज्यादा, राइट? इमेजिन 3 करोड़, दैट्स वेरी वेरी handsome sum of money. But how many players got more than 3 crores? How many of those were Indians? And recently ICC के अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसकी जीत कौन सी कंट्री ने जीता है उसको? एंड फाइनली उस कंट्री की जीतने वाले कैप्टन का नाम बताइए, right? और आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज यू शुड बी नोइंग. जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है उसमें 5 टीमें हैं, एंड and the player that fetched the most amount of money in the auctions was स्मृति मंदाना, राइट? काफी एक्साइटिंग प्लेयर है, एक्साइटिंग टैलेंट है, इंडियन लेफ्ट हैंड बैट्समैन. And she fetched 3.4 crores, and there are 2 other players, one Australian and one English player, जो इनका बिडिंग जो है ऑप्शन में 3 करोड़ से ज्यादा हुआ था. हर टीम को 12 करोड़ का पर्स दिया जाता है WPL में. इनफैक्ट आई थिंक यू शुड आल्सो फिगर आउट हाउ डज दिस कंपेयर विद द IPL. And which team was the winner? Well, India was the winner of the inaugural under 19 T20 World Cup. और विनिंग कैप्टन जो है अभी करंटली इंडियन टीम में भी है, शेफाली वर्मा जो है अंडर 19 टीम में भी खेली, और यू नो जो मेन टीम है इंडिया का वुमेन्स टीम, उसमें भी खेलती है. ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के रिजर्व्स पाए गए हैं, which is supposed to be quite very very advantageous for India. And इसमें इनफैक्ट एक एक्ट भी मेंशन्ड है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन एक्ट, जिसके अधीन जो है 4 स्टेप का एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. बट लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस कि लिथियम इतना एक्साइटिंग क्यों है, लिथियम का रिजर्व मिलना J&K में, राइट? जो कहाँ यूज होता है बेसिकली, और 2 मेंशन्ड है यूजेस, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, बट और कहाँ, राइट? इंडिया लिथियम कहाँ से करंटली इंपोर्ट करता है? और एक स्कीम जो है अप्रैल 2019 में लॉन्च किया गया फॉर फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, एंड आल्सो उसका इनफैक्ट सेकंड स्टेज है ये. एंड द सेकंड स्टेज इज ऑल अबाउट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो व्हिच वाज दिस स्कीम, व्हाट इज दिस स्कीम कॉल्ड, एंड व्हिच मिनिस्ट्री डेवलप्ड दिस स्कीम, और उस मिनिस्ट्री की यूनियन मिनिस्टर कौन है, और गवर्नमेंट के प्लान्स क्या है, बिकॉज ईवीज को पुश कर रही है, बट देयर आर नंबर टारगेट्स दैट द गवर्नमेंट हैज सेट फॉर इटसेल्फ. हाउ मेनी इन द पैसेंजर व्हीकल, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्स नीड टू बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट? सो दैट इज द क्वेश्चन. आंसर देखते हैं इसके. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम बैटरीज यूज होती हैं, राइट? ऑब्वियसली सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइन्स के अलावा इंडिया जो है करंटली लिथियम जो अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं. ऑस्ट्रेलिया इज द मेजर सॉर्ट ऑफ इंपोर्ट डेस्टिनेशन. और पेड is the name of the scheme, FAME scheme. FAME का जो phase 2 है वो currently undergoing है, पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश है. इनफैक्ट आप देख सकते हैं एड्स वगैरह में भी आजकल आने शुरू हो गए हैं, where companies are saying that, well, farthest corner of the country you'll find charging infrastructure for electric cars, right? So that's happening in India, and FAME stands for faster adoption and manufacturing of electric vehicles in India. And this is a scheme launched by the Ministry of Heavy Industries, जिसके यूनियन मिनिस्टर जो है श्री महेंद्र नाथ पांडे हैं. और करंटली जो टारगेट्स इंडिया ने सेट किए अपने लिए, 30% व्हीकल पेनिट्रेशन ऑफ EVs in the passenger cars segment, 70% in the commercial segment, and about 80% for 2-wheelers and 3-wheelers. And you can see things heading in that direction, because a lot of increasingly a lot of the cabs that you hail are becoming electric, and a lot of those 2-wheelers जो है, electric 2-wheelers जो है राइड शेयरिंग के लिए भी यूज होते हैं, और इनफैक्ट कमर्शियली भी आजकल people have started buying, and so that's slowly and steadily we're getting that 2030 तक ये टारगेट हमें अचीव करना है. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. एयरिंग एंड बोइंग का जो एयर इंडिया और बोइंग का जो डील हुआ है, which is quite remarkable, quite landmark deal. In fact, Tata Airbus का भी, in fact, Air India has also gone through a deal with Boeing, and Boeing का भी हुआ है, but also went through a deal with Airbus. So basically, it's buying aircraft from the 2 major aircraft manufacturers.
एंड इफ यू लुक एट इट, एरोस्पेस सेक्टर में काफी एक्शन हुआ है रिसेंट पास्ट में. There are a lot of MOUs being signed, by the Tata Group with a lot of companies. और टाटा ग्रुप अकेली नहीं है इसमें, काफी सारे और बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर के, दे आर आल्सो इन्वॉल्व, वेदर इट्स द टाटास, द महिंद्रास, द गोदरेज, एटसेट्रा, राइट. तो टाटा जो है, सॉरी, एयर इंडिया जो है, बोइंग से कितने एयरक्राफ्ट परचेज कर रही है, और कौन से मेजर एयरक्राफ्ट, आई मेंशन द नेम एयरबस, बट एयरबस से कितने एयरक्राफ्ट परचेज कर रही है, एंड टू इन दोनों कंपनीज के हेडक्वार्टर्स कौन से कंट्री में, राइट, यू नो दैट. And then in a partnership with the Tatas, Airbus is planning to manufacture an aircraft in India. Which aircraft, right? And which was the first private Indian company to manufacture modules of the ISRO engine, right? So basically एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर में छोटे मोटे कैपेबिलिटीज काफी टाइम से हैं इस प्राइवेट इंडियन कंपनी के पास. ये कौन सी कंपनी? And the answer is, Air India is purchasing 220 aircraft from Boeing and another 250 from Airbus. And Boeing is a US company based out of Virginia in the US, Arlington in Virginia. And Boeing is based in France. It's in a city called the Blagnac. And टाटा जो है एयरबस के साथ कोलैबोरेशन में C295 ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है. They plan to manufacture this at in the city of Vadodara in Gujarat. Or Godrej Aerospace is the company that partnered with the ISRO for manufacture of crucial parts for the DRDO engines जो यूज हुए in the satellite vehicles and all. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. ईरान और चाइना के बीच में टाइज काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन हो रहे हैं. इनफैक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान एंड द प्रीमियर ऑफ चाइना, दे रिसेंटली डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर. आई थिंक ईरानियन प्राइम मिनिस्टर जो है चाइना विजिट किए हैं, अब चाइना के प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर जो है वो जाएंगे ईरान. सो एनीवे, लॉट ऑफ एक्शन हैपनिंग देयर, and obviously causing a lot of jitters to the US. Obviously US is sanctioning Iran and also heavily against the Chinese government. So questions, right? ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? ईरान में 2015 में मैंने बोला था, 2015 में एक डील था which was signed, right? The Iranian nuclear deal was signed. तो obviously ईरान तो उसमें पार्टिसिपेंट थी, बट और कौन सी कंट्रीज थी which signed the Iran nuclear deal? And इस न्यूक्लियर डील का टेक्निकल नेम क्या है? एंड कौन से यूएस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इस डील से जो है विड्रॉ किया था, एंड देन सब्सिक्वेंटली इम्पोज सैंक्शंस ऑन ईरान. एंड ईरान में जो है काफी heavy protests happened, and they erupted in 2022 last year because of the death of a woman in custody, right? She was first beaten up and then put in jail and ended up dying in jail, and she became the poster girl for these protests. So उस woman का नाम क्या है? आंसर्स देखते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है इब्राहिम रईसी हैं. Obviously not somebody who's comes in the news too often. सेंसर होते हैं काफी. And 2015 में जो ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुआ था, that was signed by all the major countries. You can see Iran, China, Russia, US, France, Germany, UK, and even the European Union. And the name for the Iran nuclear deal is the Joint Comprehensive Plan of Action, right? JCPOA. और JCPOA से जो है बैकआउट किया यूएस ने अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प. और मोहसिन अमीनी और जीना मासा अमीनी was the name of the woman जिनको कस्टडी में लेने के बाद बीट अप करके she eventually ended up dying, and she became the poster girl for protests in Iran in 2022. In fact, these protests have also taken the shape of women empowerment in Iran, and a lot of women have come out and spoken up, right? So it's quite interesting. Next topic, antimicrobial resistance. थोड़ा सा हटके टॉपिक है ये, कि मतलब कोविड
कोविड पैंडेमिक तो हमारे पीछे जा चुका है, बट and obviously it's exposed a lot about the pharma industry and healthcare in general, and how things are evolving and how these viruses are also evolving, right? So antimicrobial resistance basically बोलता है कि आप जो antibiotics लेते हैं, microbes can develop resistance against it, right? So they can become they might not be affected by these drugs anymore, right? So that's something that we need to be cognizant about. हमें उसको उसके combat करना है, and AMR पे जो है conference हुआ है, in fact a lot of so that's what this topic is about. Where was the third global high level ministerial conference on AMR, on antimicrobial resistance held, or health and family welfare, जो obviously deals with these issues, उसकी जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है, और एएमआर पे नेशनल एक्शन प्लान यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया था, और इस प्लान के तहत कौन से 3 स्टेट्स ने अपना स्टेट एक्शन का प्लान ड्रॉ किया है, और नेम द इंटीग्रेटेड यूनिफाइंग अप्रोच जो डब्ल्यूएचओ रेकमेंड करता है टू ऑप्टिमाइज द हेल्थ of people, animals, and the environment, right? So what's that initiative called? What's that approach called? आंसर्स देखते हैं। नवंबर 24-25 2022 को जो है मस्कट में हुआ था द थर्ड ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन एएमआर, और जो हेल्थ और फैमिली अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो है डॉक्टर मनसुख मांडविया, और national action plan on AMR was launched in 2017, April 19th April 2017, और इसके अंडर जो है 3 स्टेट्स ने अपना स्टेट प्लान एक्शन प्लान बनाया है. Those 3 states are Delhi, Kerala and Madhya Pradesh. And finally, जो unified approach की मैं बात कर रहा हूँ, that the WHO sort of proposed is called One Health. Basically, optimize the health of people, animals and the environment, right? And you can see why that's so important, क्योंकि अभी ये COVID virus भी जो है, it's supposed to, increasingly a lot of these viruses, including the H5N1, H5N5, they spread from, bird species. Avian flu है जो bird से animals में आता है, in fact bird से animals में भी आते हैं, right? So it's quite dangerous kind of sort of propagation of these viruses, right? So the unified One Health approach means that we will be able to combat such kind of things, right? Next topic, windfall taxes. Oil companies पे windfall taxes का topic है. In fact, गवर्नमेंट ने बेसिकली भी आके बोला है कि भाई हम windfall taxes अभी भी रहेंगे और हम इसको देखते रहेंगे. अभी तो it's they will continue, right? So that's how long we don't know, but they will continue. तो ये windfall taxes होते क्या है, right? So then obviously windfall itself means पर फाड़ के गिर जाना कहते हैं, जैसे windfall means that. So windfall taxes जो है, they unanticipated spike in earnings resulting from what has और currently जो है इसका current कारण क्या है, right? General reason क्या होता है और इसका current specific reason क्या है, और कौन से कमिटी का रिपोर्ट जो है आया था जिसने जस्टिफाई किया था विंडफॉल टैक्सेस, और ये कब लागू हुआ बाय द इंडियन गवर्नमेंट, एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम. विंडफॉल टैक्स तो इसका कोलोकियल नेम है, इसको स्पेसिफिकली किस नाम से लिवाई किया जाता है, राइट? ऑयल पे. तो इसका आंसर है कि विंडफॉल टैक्सेस आर रेफर टू windfall profits actually refer to unanticipated spike in earnings due to an exogenous event, and ये natural disaster हो सकता है, and this has nothing to do with the business decisions made by the companies, right? So basically अभी currently this exogenous event is the Russia Ukraine war, जिसकी वजह से जो है oil का price जो है well expectedly ही है, but it's really gone high, and that means that the top energy companies, oil and energy companies across the world are enjoying stupendous amount of profits. तो इंडिया में आई थिंक बीके चतुर्वेदी कमिटी थी जिन्होंने ऑयल कंपनीज के फाइनेंशियल पोजीशन को स्टडी किया था. 2008 की कमिटी है, और उन्होंने तब प्रपोज किया था कि भाई टैक्स किया जा सकता है, और टैक्स इसलिए करो ताकि मतलब उस पैसे को रिएलोकेट आप कर सकते हो, ताकि जब the prices are expected to increase, तो जब इंक्रीज होंगे तो आपके पास एक कॉर्पस होगा, right? So that was proposed by the BK Chaturvedi committee,
राइट? वेल, वर्डिक्ट इज आउट देयर कि भाई ये उस पर्पस के लिए यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, बट एनीवे लास्ट ईयर 2022 के जुलाई में ये विंडफॉल टैक्सेस जो है इम्प्लीमेंट किए गए बाय द गवर्नमेंट, and they are imposed on oil companies under the name SAED, which is Special Additional Excise Duty, right? तो ये per ton per barrel kind of इसका metric है, right? The value is probably not so important for you, but I think you should know the name. नेक्स्ट टॉपिक, आदि महोत्सव जो है इनॉग्रेट किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये ट्राइबल फेस्टिवल है, और इसका ये आदि महोत्सव जो है न्यू दिल्ली में हुआ था, राइट? तो ऑब्वियसली ट्राइबल फेस्टिवल है, तो इस पे क्वेश्चंस भी ट्राइबल्स के बारे में आएंगे। बहुत पॉपुलर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई करी थी। इनफैक्ट ही आल्सो फोर्स्ड द कॉलोनियल ऑफिशियल्स टू इंट्रोड्यूस लॉज प्रोटेक्टिंग लैंड राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स। तो ये फ्रीडम फाइटर का नाम क्या है? और 2000 में इस फ्रीडम फाइटर के बर्थ एनिवर्सरी को के दिन कौन सा स्टेट कार्व आउट किया गया था? 2000 की बात है ये। और करंटली जो है ट्राइबल अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? और ट्राइबल अफेयर्स में जो है एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एजुकेशन इनिशिएटिव। ऑब्वियसली इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने भी अपने स्पीच में यही को मेंशन किया था कि भाई हमारा फोकस विल बी ऑन एजुकेशन ऑफ ट्राइबल्स एंड मेक श्योर दैट they are they know as much and they are able to survive in today's rapidly changing world. So education पे फोकस है। तो कौन से ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल्स एस्टैब्लिश किए गए थे टू केटर टू द शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रन इन रिमोट एरियाज? तो स्कूल्स का नाम क्या है? तो आंसर इज बिरसा मुंडा इज द फेमस रेवोल्यूशनरी, फेमस फ्रीडम ट्राइबल एंड फ्रीडम फाइटर। और इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ही जो है झारखंड का स्टेट बनाया गया था, 2000 की बात है, राइट? दैट्स प्रीटी मच द एरिया वेयर ही हेल्ड फ्रॉम। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी जो है एक मुंडा है, मिस्टर श्री अर्जुन मुंडा। और जो रेजिडेंशियल स्कूल्स प्रपोज्ड है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रन इन रिमोट एरिया, उसका नाम है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, और EMRS, which was started as far back as 1997-98। और इसको इनफैक्ट रिन्यूड पुश भी अभी मिल रहा है। Which organization was established to bring about socio-economic development of tribals by instituting trade of minor forest produce and surplus agricultural produce, right, collected by them. So basically tribals के livelihood के लिए कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, राइट? और इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन से एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया गया, राइट? तो इट्स इंटरेस्टिंग, ये ऑब्वियसली इट्स इन्वॉल्वड इन ट्रेडिंग ऑफ माइनर forest produce and agricultural produce, that the tribal folk will be able to participate in. So obviously unique kind of goods or unique kind of produce hoga ye, and the organization that was created was called the TriFed, and TriFed was established as a multi-state cooperative, right, under the in fact it's a national cooperative established under the Multi-State Cooperative Societies Act of 1984. तो basically प्रोक्योर करेंगी ये अलग अलग रीजन्स के ट्राइबल्स से गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देन इनफैक्ट द आइडिया इज आल्सो टू सॉर्ट ऑफ टेक इट एंड एक्सपोर्ट इट, राइट? एक्सपोर्ट मार्केट्स को टैप करने का भी आइडिया है। इनफैक्ट नेशनल कोऑपरेटिव्स का टॉपिक एक मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूँ, और इनफैक्ट ये काफी सारे जो नेशनल कोऑपरेटिव्स अभी सेटअप किए गए हैं इनका भी फोकस जो है एक्सपोर्ट ही है, राइट? So do check out, do revise that topic. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है फाइनली अब अदानी पे एक कमिटी अपॉइंट करने का एक प्रपोजल दिया गवर्नमेंट को, एंड देन जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने आर्ग्यू किया कोर्ट में कि मुझे डिस्कस करने दीजिए विद द गवर्नमेंट एंड द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और हम फिर वापस आएंगे, आपको बताएंगे भाई कमिटी के बारे में, राइट? और उन्होंने मतलब वापस आकर के डिस्कशन के बाद वापस आकर बोला कि नहीं, आप जो है कमिटी आप ना एस्टैब्लिश करें, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत सिग्नल होगा मार्केट्स के लिए, क्योंकि एक रेगुलेटर पहले से ही है, राइट? तो आप अगर एक कमिटी अपॉइंट करेंगे तो रेगुलेटर का काम क्या है, राइट? सो दे प्रपोज्ड कि नहीं, आप अपॉइंट ना करें, हम जो है एक सील लेटर में कुछ नाम प्रपोज करेंगे और कुछ चीजें प्रपोज करेंगे कि व्हाट आर द इश्यूज दैट नीड टू बी चेक्ड अप बाय द कमिटी, एंड वेल यू कैन देन डिसाइड, राइट? एंड इट विल बी एन सील्ड कमिटी, मतलब हमारे प्रपोजल्स और हमारे जो नेम्स जो हम मेंशन कर रहे हैं वो पब्लिक को नहीं पता चली, राइट?
And then the Supreme Court came back and said, no way, we want complete transparency, that is our objective. तो हम आपके proposal को accept नहीं कर सकते हैं, right? So that's Supreme Court's verdict, Supreme Court's decision. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी सजेस्ट करी थी उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, और गवर्नमेंट के लिए पिटीशन जो है फाइल को किसने किया है, एक्चुअली मैं बता चुका हूं आपको ये बात, और ऑपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस है उनका डिमांड क्या है, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बना रही है, ऑपोजिशन पार्टी क्या मांग रही है, कांग्रेस क्या मांग रही है, और ये पूरा जो अदानी का इश्यू है ये भी मैं एक बार कवर कर चुका हूँ पास्ट में, लास्ट वीक के टॉपिक था इनफैक्ट, बट नहीं, आई थिंक उससे भी पुराना, बट अदानी का जो फियास्को है, हिंडनबर्ग, द कंपनी दैट सॉर्ट ऑफ केम आउट विद देयर रिपोर्ट, तो they did something. They basically bird up. I know that you probably know this, but what is it called when investors borrow some shares and then they sell them in the open market, and then they expect to buy those share back from the open market at a lower price, right? And they obviously expect the price to drop, right? And that expectation is based on some analysis, right? But what is that called, right? And then when they buy it back, they'll eventually give it back to the lenders, right? क्योंकि shares चाहिए, बेचने के लिए shares चाहिए, तो पहले तो lend करते हैं, right? तो इसको क्या कहा जाता है? एंड रिसेंटली कांग्रेस ने एक और इसके बारे में काफी शोर मचाया है, विच इज कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का अदानी के साथ, अदानी ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, which came up and heavily opposed by the Congress, saying कि भाई गवर्नमेंट जो है नेफेरियस तरीके से मतलब सपोर्ट करती है ऐसे कॉर्पोरेट्स के साथ, हैंड इन ग्लव रहती है ऐसे कॉर्पोरेट्स के साथ, और उनको जबरदस्ती काम देती है, इवन इफ इट is not in the best interests of the public sector undertakings. तो ये जो है कौन सी PSU थी, और ये थोड़ा सा और बताए इसके बारे में, राइट? तो इसका आंसर है कि composition of committee is, it's supposed to be an expert panel composed of domain experts as well as a supreme as well as a judge, and India and government के लिए जो है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो अपीयर हुए थे इस केस में, और कांग्रेस की मांग जो है कमिटी नहीं है, दे वांट अ जॉइंट पार्लियामेंट्री प्रोब, करें कि भाई आप डिस्कस कर लो यार पार्लियामेंट में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी आप एक सेटअप कर लीजिए, और short selling is the name given to that phenomenon of first borrowing shares and then selling it to the market and then buying it back later when the prices drop, and then making a profit, and then returning the shares back to the lender, so that's called short selling. This is what Hindenburg did. In fact, it's alleged, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस अगर आप समझते हो तो एलिगेशन भी ये है कि इसमें जो है दिस इज नॉट प्रॉपर, बिकॉज अगर आप जो है पहले आप शेयर खरीद लेते हो तो आपका प्रॉफिट इस बात पे हिंज करेगा ना कि शेयर प्राइस ड्रॉप हो, राइट? तो अगर आप उसके बाद आप ही एक रिपोर्ट निकालते हैं तो isn't that a clash of interest कि आप ही पहले मतलब दूसरी कंपनी को मलाइन कर रहे हैं उनके बारे में, well I don't know, the Adani group has come back and said it's all false, right? But I don't think it's all false, right? And I know that some of you will agree with me, but anyway, it doesn't matter. I'm talking about the propriety of what Hindenburg is doing, right? And that's itself a bit of a gray area, but obviously you need some of these vigilante kind of groups जो बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज है, एंड हिंडनबर्ग इंडेड इज वन ऑफ दोज, राइट? छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बड़े बड़ी कंपनीज को टेक ऑन किया है, एंड वेल they've always sort of come up on tops, right? They've always called the right bets, right? So then there's that, and finally ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट था जो is quite controversially brought up by the Congress. Congress is demanding, so the idea is कि IOC ने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है अदानी ग्रुप के साथ to use the गंगावरम पोर्ट in विशाखापट्टनम, और I think that the Congress is alleging कि भाई ऐसा क्यों, why would you need to use the Adani port when there is a government port in विशाखापट्टनम, आप वो वाला पोर्ट क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो? और and by the way, this contract that has been signed is also the kind of contract is also weird कि मतलब फुल कैपेसिटी पे आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि यूज और आई थिंक hold or use, I think that's called, right? Anyway, the technical name I forget, but
बट द आइडिया कि जितना भी कैपेसिटी है पोर्ट का, आप उतना यूज करो चाहे कम यूज करो, ये आपकी मर्जी है, आपको पैसे तो इतने देने पड़ेंगे, राइट? So it's a fair kind of a contract which the government has signed, and the question is, why would you sign this kind of a contract when there is already a government port, right, in operated in Visakhapatnam? So those are questions being asked of the Indian Oil Corporation and the government of India. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फाइनल टॉपिक है आज का, विच इज द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। तो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, राइट? तो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हैपेंड ऑन March 1st, और काफी टेंस सिचुएशन है इसके बारे में, क्योंकि मतलब इंडिया में हो रही है मीटिंग, और आई थिंक द लास्ट मीटिंग दैट हैपेंड इन बाली, इंडोनेशिया, उस पे पार्टिसिपेशन वाज पुअर। द रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो है लाव्रोव, वो after the meeting happened, he walked out from the summit, right? So a lot of reasons why the Bali FMM was considered to be a kind of a failure, right? So India is making all the efforts to make sure that वैसा situation यहाँ पे ना हो, मतलब participation भी robust होनी चाहिए, all major nations should attend and should observe all the you know एजेंडा पे जो भी चीजें डिस्कस होनी है, जो भी आइटम्स टिक ऑफ करनी है, वो सारी चीजें हो जानी चाहिए। दैट इज व्हाट इंडिया वांट्स, राइट? तो G20 के बारे में बात करते हैं। विच सिटी विल होस्ट द G20 समिट इन 2023? सितंबर में होने वाला है। और क्योंकि ये फॉरेन मिनिस्टर की बात है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है, और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? नाम बड़े ऑब्वियस है, व्हिच आई एम, थोड़े सुपरस्टार काइंड ऑफ पर्सनालिटी भी है उनकी। और इंडिया जो है करंटली G20 की प्रेसिडेंसी है ना, रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है, हर साल रोटेट होती है। तो इनफैक्ट ये टॉपिक मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। G20 ट्रोइका बोलते हैं कि द कंट्री दैट हेल्ड द प्रेसिडेंसी लास्ट ईयर, दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर, राइट? इसको G20 ट्रोइका बोलते हैं। तो करंटली इंडिया के पास है, तो इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? And India's G20 presidency is also, it's also very momentous because it marks something called the Amrit Kal. तो ये अमृत काल, ये ऐसा नाम क्यों, राइट? तो आंसर्स देखते हैं इसका। इंडिया में न्यू दिल्ली में G20 का समिट होगा, लाइक आई सेड, 9-10 सितंबर 2023। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है डॉक्टर एस जयशंकर हैं, एंड जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल, एंड इंडिया के जो G20 प्रेसिडेंसी का थीम है, दैट इज वसुधैव कुटुंबम, व्हिच इज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, राइट? Not sure that it completely translates the Sanskrit word, but Sanskrit phrase, but Vasudhaiva Kutumbam, world is a family, right? Vasudhaiva Kutumbam. And G20 presidency जो है, it marks the beginning of Amrit Kal, which basically marks कि इंडिया का 75th year of independence है, और from the 75th to the 100th year of independence, जो अगले 25 साल होंगे, इनको अमृत काल के नाम से जाना जा रहा है, कि भाई इंडिया जो है लास्ट 25 years, by the time it completes a century of existence as a nation, and plenty of activities are planned, and hopefully this will be a very very fruitful period for our country. That is why Amrit Kal, है ना? तो इसी के साथ आज का एजेंडा समाप्त होता है। जाते जाते आपको क्विक रिमाइंडर दे दूं, साइन अप जरूर कीजिए, लिंक जो है यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साइन अप करने के मल्टीपल फायदे हैं। एक सबसे बड़ा फायदा जो मैं कहूंगा वो है कि आपको हमारे मॉक टेस्ट का एक टेस्ट जो है फ्री में एक्सेस मिलेगा, राइट? एंड दैट्स समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली टेक अप, क्योंकि वेल एक तो है कि मैं कहूंगा कि हमारा टेस्ट सीरीज बहुत अमेजिंग है, क्योंकि पैटर्न में, डिफिकल्टी में हम लोगों ने क्लैट को मिमिक किया है, सारे पेपर्स को असेस करके, स्टडी करके बनाया है, और ऐसा नहीं कि आउटसोर्स कर दिया, हमने सारा इन हाउस बनाया है। और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत हाई है, और क्वेश्चन ही नहीं, हमने सॉल्यूशंस एंड डिटेल्ड सॉल्यूशन बनाए हैं आपके लिए। आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम, और पोर्टल पे जाएंगे तो आप एनालिसिस भी आप अच्छे से कर पाएंगे, राइट? सो दोज आर मेनी मेनी रीजंस, बट ऑब्वियसली मेरी तारीफ सेल्फ प्रेज के अलावा, आई थिंक एज अ सीरियस क्लैट एस्पिरेंट आपको भी ये सोचना है कि भाई अगर मैं क्लैट की तैयारी कर रहा हूँ, तो अलग टाइप का मॉक अगर आपको चाहिए तो हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ट्राई कीजिए, राइट? मार्केट में दावा करता हूं कि कोई भी टेस्ट सीरीज के आसपास नहीं आएगी, राइट? सो दैट्स वन बिग रीजन व्हाई यू शुड साइन अप। बट अगर आप जीके की तैयारी के लिए
साइन अप करना चाहें तो भी काफी बेनिफिट्स हैं, कि जो भी मैं ऐसे वीकली जीके के डिस्कशंस कर रहा हूँ, 100 ऑड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तो ये सारे 100 क्वेश्चंस जो है आपको टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे पोर्टल पे, राइट? सो रिविजन आपका आराम से हो जाएगा, मे बी क्लोजर टू द क्लैट। तो साइन अप टुडे, कीप द अकाउंट रेडी, एंड अकाउंट में अभी रजिस्टर करने का ये भी फायदा है कि आपको जो है हर टॉपिक पे जब आप टेस्ट लिखेंगे, तो जब आप आंसर कीज देखेंगे ना, तो आंसर कीज में मैंने हर टॉपिक के लिंक्स दिए हैं, रिसर्च लिंक्स दिए हैं, राइट? सो व्हिच मींस अगर 5 क्वेश्चन एक टॉपिक पे आ भी रहे हैं, तो और 5 क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप, राइट? एंड दैट्स द एडवांटेज, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दोस रिसर्च लिंक्स, राइट? तो वेल, दैट्स इट फॉर टुडे। आई थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।